हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटर एट्रियल सेप्टम, सेकंड इज इंटर वेंट्रिकुलर एंड थर्ड इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. फर्स्ट ऑप्शन में थिक फाइब्रस है इंटर एट्रियल सेप्टम के लिए, सेकंड इज थिन मस्कुलर, थर्ड इज थिन मस्कुलर, फोर्थ इज थिक मस्कुलर. सेकंड है इंटर वेंट्रिकुलर, इसमें फर्स्ट है थिक फाइब्रस, थिन फाइब्रस, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड. And arterioventricular septum के लिए there is thin muscular, thin fibrous, thick fibrous, thick fibrous. So the key concept for this question is septum of the heart. Heart के in all three septum होते हैं. First is the interatrial septum. As the name suggests, ये दो एट्रिया के बीच में होते हैं. Second is the interventricular septum. These are between the two ventricles. And third is the arterioventricular septum. This septum is present between the arteries and the ventricles of both the sides. So coming to the diagram, this region is the left atrium. This region is the left ventricle. This region is the right atrium. And this region is the right ventricle. दो ventricles के बीच में जो septum present है, it is this one. This septum is present between the two ventricles. Therefore, this septum is known as the interventricular septum. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे बोला जाता है इंटर एट्रियल septum. And finally, there are septums which are present in between the left atrium and left ventricle and between the right atrium and right ventricle. These are called the arterioventricular septum. So three types of septum. Interatrial septum दो एट्रिया के बीच में, लेफ्ट एंड राइट. दूसरा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में. एंड थर्ड इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, लेफ्ट एंड राइट. होता है that is to prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood in the different chambers of the heart, into effective circulation and oxygenation in all the parts of the body. का जो स्ट्रक्चर होता है सब में डिफरेंट होता है. बेसिकली द इंटर एट्रियल सेप्टम इज थिन एंड मस्कुलर. द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज thick and fibrous, and the interventricular septum is thick walled. So coming back to the क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग सेप्टम के. फर्स्ट इज इंटर एट्रियल, दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है वो थिन और मस्कुलर होता है, सो दिस इज राइट, दिस इज राइट. सेकंड, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है, सो दिस इज राइट एंड दिस इज राइट. एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिक एंड फाइब्रस, सो दिस इज राइट एंड दिस इज राइट. सो तीनों करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 में है. So the final answer for this question is option C. Hope you understood well. Best of luck.